Is it something like becoming nothing? Becoming one with everything, something like that. Okay, becoming nothing. Too much high, yes, of course. Becoming nothing. Like I said, हम जब मौन होने की कोशिश करेंगे, क्वाइट और काम होने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल बोलने को बंद नहीं करने को है, आपके अंदर कोई विचार नहीं है, विचार शून्य, नथिंग. बीइंग वन विद एवरीथिंग, दैट मीन्स एवरीथिंग हो जाएगा, बीइंग वन विद एवरीथिंग. व्हाट इज आफ्टर दैट देन? अगर मैं ही सब कुछ हो गया तो उसके बाद भी कुछ होना चाहिए. दोनों ही डायरेक्शन में एंड ऑफ द स्टोरी है. अगर मैं जीरो हो रहा हूं और अगर मैं इनफाइनाइट हो रहा हूं, पॉसिबल है यहां पहुंचना भी. हाउ अबाउट ये दोनों मेरे साथ जब मर्जी रह सकते हैं. मैं कभी भी जीरो अचीव कर सकता हूं, कभी भी इन्फिनिटी अचीव कर सकता हूं. लाइक मेरे घर के दो कमरे हैं मेरे पास, एक जीरो रूम, इन्फिनिटी रूम. एज आई सीम फिट आई एंटर द रूम. हाउ अबाउट ये आप रोज करते हो, जीरो और इन्फिनिटी आप कर ही रहे हो टू सर्टेन डिग्री. एवरीबडी इज डूइंग दैट, ऑल लिविंग क्रीचर. कैसे करता है? हम जब रात को सोने जाते हैं, हम जीरो होना चाहिए, हो पाते हैं कि नहीं अलग बात है. हम जब जाग जाते हैं, उठ के कुछ भी करते हैं, जॉब, स्कूल, ऑफिस, वर्किंग, वट एवर वी आर डूइंग, सिर्फ जाग के बैठना ही हमारा नर्व एंडिंग्स को भी एक्टिवेट कर देता है. क्वेश्चन ये है कि कितना ज्यादा जीरो डिग्री में आप रह सकता है, कितना ज्यादा सो सकता है, नहीं, आप कितना नींद में गहराई में जा सकता है टूवर्ड्स जीरो, इन द जीरो. जैसे एक जीरो डिग्री पे पानी लिक्विड है, सेकंड जीरो डिग्री में पानी सॉलिड आइस है. बोथ जीरो डिग्रीज. सम पीपल आर जीरो डिग्री लाइक वाटर, स्टिल मूविंग, still feeling the disturbances. Zero like ice, not moving, quiet, calm. Able to move, but on choice, very calm. Cool as ice in this sense. Second part is infinity. Some people can say, you are happening. आप कितना जगह में एक साथ मूव कर सकते हैं, फिर भी थकते नहीं. पूरा दिन काम करते हैं, थकते नहीं हैं. शाम को भी घर आके एक्टिव रहते हैं. क्या वजह है? That is your infinity. It is not you becoming absent from the world. You go to zero on your choice, go to solid zero, quite calm as ice. Refresh yourself. Next day, keep working to the maximum potential. Yes. So, energy way is not about disengaging from the life and separating ourselves. It is to enjoy the life as we see our life around us. Second thing is to change our life condition from A to B. Where are we going, in which direction? If I say we go to fundamental, that looks like zero, going towards. Go to infinity or go to either direction. That means you don't aim for anything. You have both of them, or you have any other both of them, all of things. You choose. How do you choose? If you are just energy, are you even choosing anything? Yes, we are observing around us. We are observing my environment, and my environment and me are interacting. आप जो कुछ देखते सुनते हैं, उसको सुनने समझने से आपके अंदर से एक रिस्पॉन्स आएगा. ये कुछ करना है, नहीं करना है, चाहिए है, नहीं चाहिए है. At the time when you see yourself in certain realm, there is always a next realm available. Without desire, even no desire, I just need to go next. Why? Because I am born. Should I desire to be rich, famous, active? No. That is just doable. Just to do that. Going forward, rising is because I'm born. Rising is my just natural ability. Instead, not getting stuck in the information, like zero and infinity, your choice. Your choice. How much zero you can be, how much infinity can you be. And between them also. Can you stay in the center? Not stay in zero, not sleep all the time. Not stay infinity, don't always keep vibrating, functioning. Keep vibrating in the neutral also. Yes, understandable? Zero, nothing. Infinity, everything. I'm still me in the center of it. Energy. Then where is this energy going? The answer is consciousness. The next layer after energy is consciousness.
You do certain energy rising, consciousness. Is consciousness God? Are we religious people? I'm a religious person. I'm born in the so-called Hinduism. So I have my input and my understanding, a lot of them, from Hinduism. I believe in Hinduism. I'm born here. But while growing up, I a little bit read other religion also. I have some fair bit understanding. All religion targeting rising of the being. Rising means your midbrain activity higher, your heart of heart, inside the heart is higher potential. आपका हार्ट ज्यादा ब्लड सर्कुलेट कर सकता है, आपका दिमाग ज्यादा स्वस्थ रख सकता है, आपके ऑर्गन अच्छा और स्वस्थ है. ये रिलीजन है. आई एम प्रैक्टिसिंग द रिलीजन, अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन. Yeah, complicated है. So we approach through the science. Neuron, synapses, electricity flowing. We don't choose, so we are not the karta. Yes, we don't choose. आप ऐसा समझें इसको, ये क्वेश्चन कई बार आएगा, पहले भी आया है, आगे भी आएगा. Should we be in the controlling seat? I decide my life. Yes, I am the architect of my life, but not as I am the karta here. आप ऐसा समझो, एनर्जी के अलग अलग वाइब्रेशंस हैं लेयर्स में. आप जोन सा लेयर में जी रहे हैं, उस लेयर का आपके आसपास सब कुछ बना हुआ है. आपका समाज, आपका परिवार, आपका फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सब उस लेयर पे है जितना आप वाइब्रेट कर रहे हैं अभी. इस वाइब्रेशन को चेंज करना आसान नहीं है. उसीलिए हम एनर्जी के रास्ते आगे बढ़ रहा है. अगर एनर्जी सीख गया और आपने ये लेयर चेंज कर पाया अपना, दिमाग से नहीं, मसल से तो बिल्कुल ही नहीं, तो अलग लेयर में आप सब कुछ दूसरा पाएंगे. फैमिली इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएगा, आपके अपने ही परिवार के लोग अलग तरीकों से बात करने लगेंगे, एंड सो एंड सो एंड सो. तो एक दृष्टिकोण से, थ्रू वन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने खुद ही बनाया है ये. बट बारीक से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से, look closely and you can see all you did was shift the energy, everything else is created.